Assalamu alaikum. Today we'll be continuing with the first chapter and studying the portion HIV and AIDS. ठीक है? The first part of this chapter is understanding what retroviruses are. Retroviruses are viruses that contain the enzyme reverse transcriptase. ठीक है? Reverse transcriptase का basically role होता है to reverse transcription. Transcription being converting DNA to RNA. The reverse transcription में basically RNA से DNA बनाया जाता है. Retroviruses are also known as oncoviruses. Why? Because they have the potential to turn healthy cells into cancerous cells, जिनकी वजह से हम इनको RNA tumor viruses भी बोलते हैं क्योंकि इनके जीनोम में RNA होता है which is linear RNA, ठीक है, and they have the cancerous ability, तो इनको tumor viruses बोलते हैं. And इसकी एक example है कि tumor production in fowl, rodents and cats is because of retroviruses, ठीक है. They have non-specific action but usually infect cells with specific receptors. इसका क्या मतलब है? इनका कोई एक specific method नहीं है infection का कि वो एक specific disease cause करें. Instead, they can have a wide variety of effects. For example, HIV में it doesn't cause one singular infection. It causes your immunity to weaken, जिसकी वजह से opportunistic diseases आते हैं और opportunistic diseases कोई भी हो सकते हैं, right? So action specific नहीं है, लेकिन they infect cells with specific receptors. For example, in HIV, they infect specific cells that have CD4 receptors, ठीक है? Retroviruses usually have two RNA molecules. They're spherical in shape. They are about 100 nanometers large and they are enveloped viruses. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया retroviruses की general points. Now it's time to study what HIV is. ठीक है, so first we're going to tackle the history of HIV. In 1980s, it was observed in young homosexual males having symptoms like rare vascular cancer, severe pneumonia, and sudden weight loss. मतलब ये males आ रहे थे and a lot of them had similar symptoms या complex of these symptoms या one of these symptoms, multiple of these symptoms. So ये एक basically common पता चल गया था, ठीक है? And later, non-homosexual patients, मतलब जो heterosexual patients है, for example, they were given blood transfusions or blood products और उनके अंदर भी फिर HIV observe हुआ. In 1984, it was officially identified as a virus by Pasteur Institute in France and National Institute of Health in United States of America. ठीक है? And in 1986, it was finally named HIV. Now, the way I remember these years is कि basically 1980s का ये सारी dates है, right? And 8 kind of sounds like AIDS. So इस trick से आप remember कर सकते हैं कि सारे जो points है ये 1980s में हुई थी and they were related to AIDS. So as we know, HIV causes AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. लेकिन it doesn't directly cause AIDS. In fact, AIDS is the last stage of HIV. उससे पहले asymptomatic carrier stage आता है and age-related complex stage आता है. Okay? HIV is host specific. As I said, it only infects cells with CD4 receptors. CD4 receptors कौन से receptors होते हैं? These are the receptors present on T helper cells, macrophages, and certain brain cells in the central nervous system. And if you don't remember what T helper cells are, these are helper cells that activate the beta cells to release antibodies and activate cytotoxic T cells to kill virus-infected cells and cancer cells. ठीक है, so basically T helper cells are enhancing the response of other immune cells. तो जब इनकी count decrease होती है because of HIV, immune deficiency होती है, and immune deficiency से opportunistic diseases attack करते हैं. Opportunistic diseases होते क्या हैं? These are diseases that are caused by ऐसे agents that usually will not affect you. Usually they will not cause any infection to the body. In fact, they might even live in the body, ठीक है, and cause you no infection, no disease. लेकिन जैसे ही आपकी immunity कम होती है ना, ये उसका opportunity लेते हैं and they infect. ठीक है, so इसकी example है toxoplasmosis, tuberculosis, pneumonia और हम और भी कुछ examples पढ़ेंगे in the future slides. ठीक है, HIV के जीनोम में reverse transcriptase enzyme होगा. Obviously, as I mentioned, इसका role है to convert the viral RNA into viral DNA. लेकिन फिर ये viral DNA integrates मतलब incorporates into the genome of the host cell. मतलब जो host का DNA है उसमें अब ये viral DNA भी incorporate हो जाएगा और ये जो अब state है जिसके अंदर viral DNA भी है और host का DNA भी है, this is called a provirus.
Okay. Now, HIV is transmitted to three major ways: sexual contact, contact with blood, and breastfeeding. ठीक है, and this is important ताकि क्योंकि इससे जो opposite होते हैं ये इसका basically control measures बन जाते हैं, right? कि avoid contact with blood, avoid sexual contact, avoid breastfeeding if someone has HIV. ठीक है. Now the following point is in Punjab textbook, लेकिन please note कि अभी तक कोई vaccine effective नहीं है, अभी इसका कोई cure HIV का नहीं आया, ठीक है, लेकिन there have been obviously vaccines that have been in testing, and so one of them was in testing since 2001 in South Africa, लेकिन please note that it was not effective, ठीक है. अभी तक जो हमारे पास जरा सा cure समझे, not even a cure, it's just like a therapy you can say, is antiretroviral therapy. ठीक है, ART. It is basically a daily pill. It is very expensive, and the person with HIV takes it. और उनका basically जो लाइफ स्पैन है वो almost उतना हो जाता है जितना normal person का होता है. लेकिन of course it is an expensive and inconvenient process, so not everyone is able to do it. ठीक है, and this isn't exactly a cure. The person still has it. उनकी बस life basically prolonged जरा सी हो जाती है. So now we will study the structure in the next slide. Now we will study the general structure of an HIV virus. So please turn your attention to this diagram right here. इसमें आपको नजर आएगा कि एक conical capsid है right here. ठीक है? This capsid is composed of 100 capsomeres. ठीक है? And then we have a layer of matrix proteins between the capsid and the envelope. Okay? This light blue layer. And then we have the envelope. ठीक है? So the envelope makes it so it's a spherical virus, लेकिन please note that इसकी जो capsid है, it is conical. ठीक है? The overall size of this virus, as mentioned before with retroviruses का general size, it's 100 nanometers. ठीक है? इसके genome में आपको दो copies मिलेंगी RNA की, and these are positive ssRNA, मतलब जो positive sense single-stranded RNA के pieces होते हैं. ठीक है? इसकी core proteins में आपको three main enzymes मिलेंगे. Reverse transcriptase, obviously. Integrase, which is the enzyme that helps to make the provirus because it integrates the viral DNA into the host DNA. And then we have proteases. ठीक है, और इसका भी मैं function आपको बताती हूँ. Basically ना, जो genes हैं from this RNA, it basically translates into large proteins. ठीक है, तो बड़ी बड़ी proteins form होती हैं. ठीक है, from these genes directly large proteins बनती हैं. ये जो protease है ना, ये इनको छोटे chunks में ना cleave करता है. ठीक है, और फिर ये जो अब छोटे छोटे chunks है ना, ये actually virus के structure में proteins use होती हैं. ठीक है, तो वो जो main बड़ा सा protein बना था वो directly नहीं use होता. Instead ये protein उससे पहले protease इससे पहले break down करते हैं, और ये जो छोटे छोटे parts हैं ये virus use करते हैं अपने structure में. ठीक है? Then in the envelope, you will notice that there are these glycoprotein spikes. इनका आपको पता होना चाहिए. One is GP120. It is on the outer transmembrane. ठीक है? And it basically recognizes the host cell and attaches the HIV to the host cell. Sort of attachment. ठीक है? And then the GP41, which is in the inner transmembrane, it basically fuses the HIV to the host cell membrane. ठीक है, तो एक attachment एक बात है. ठीक है, fuse एक और बात है. ठीक है, so इनके functions आपको बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए. ठीक है, और दूसरी बात, ये जो structural proteins बनते हैं, they are coded for by 3 genes. ठीक है, लेकिन ये जो total genes है आपके पास इस RNA में वो 9 है. ठीक है, so out of the 9 total genes, 3 of them are used to code for structural proteins. Alright? Now it's time to study the life cycle of the HIV virus. सबसे पहले, using the help of glycoproteins, the HIV basically fuses to the host cell. ठीक है? अब fuse हो गया, अब जो conical capsid है, it releases in to the host cell via endocytosis. ठीक है? And then the host की जो proteases है ना, they break down the capsid. अब आपके पास जो enzymes थे और जो RNA strands हैं, they are now free into the cytoplasm. ठीक है? Now reverse transcriptase acts on these RNA strands. ठीक है? And पहले सबसे बनता है RNA DNA hybrid.
ठीक है। सो उस एक आरएनए स्ट्रैंड से एक वन स्ट्रैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना है और अब हमारे पास एक आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का हाइब्रिड बना हुआ है। जो अब आरएनए का स्ट्रैंड था ना हमारा इनिशियल, इट्स गोना बी ब्रोकन डाउन बाय न्यूक्लियसेस और वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है उससे एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा using polymerases. So now we have double-stranded DNA. And this is very important. This is double-stranded DNA that is going to be incorporated into the host genome. ठीक है? So जब provirus बनता है उसके अंदर जो viral DNA, it is double-stranded in nature. This is an MCQ point. Okay? So now it is integrated into the host genome. अब इससे ऑब्वियसली फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, ठीक है। उस एमआरएनए से फिर प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती हैं और फिर एक और चीज भी होती है, ठीक है। एक साइड से तो एमआरएनए बन रहा है, दूसरी साइड से रेप्लिकेशन हो रही है इस बेसिकली आरएनए की। क्या होता है इस डीएनए से बेसिकली वो आरटीएसएस आरएनए बन रहा है विच आर वायरल जीनोम कॉपीज बेसिकली। तो फिर जो ताकि ये फाइनल असेंबली में जो फाइनल एचआईवी है उसमें फिर जीनोम भी आपके पास हो और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो, ठीक है। सो एमआरएनए से स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन रही है जो वे प्रोटीज फिर क्लीव करेगा और फिर वो छोटे पार्ट्स उसके यूज होंगे बेसिकली। और फिर दूसरा इसकी वायरल जीनोम कॉपीज बन रही है। And then the assembly of all of these happen at the inner surface of the cell membrane of the host cell, ठीक है, and then it buds off, ठीक है। और जब ये बड ऑफ करता है तो ये ऑब्वियसली होस्ट की कुछ सेल मेम्ब्रेन भी तो ले रहा है, राइट, टू मेक इट्स एनवेलप, एज वी डिस्कस द एनवेलप इज होस्ट डिराइव्ड, राइट। और जब ये लेता है ना तो जो होस्ट सेल है उसके वॉल्यूम में इतना डिक्रीज आता है कि वो अब नॉन फंक्शनल होता है। सो नाउ दिस सेल आफ्टर द HIV लीव्स इज नॉन फंक्शनल, ओके। And another point, which is right here, we have been unable to remove the viral DNA from the host DNA. मतलब हम प्रोवायरस को basically separate करना, like we haven't been able to do that, जिसकी वजह से अभी तो कोई वैक्सीन effective नहीं हुई, okay? ये मैंने mention कर लिया, viral proteins and RNA assemble at the inner surface of the cell membrane and they are removed from cell by exocytosis. और ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये पूरी फ्लो चार्ट बना दिया। पहले अटैचमेंट होती है, फिर एंट्री होती है, फिर अनकोटिंग ऑफ कैप्सिड होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक्शन होता है, इंटीग्रेट होते हैं एंड इट मेक्स द प्रोवायरस, देन द वायरल पार्ट्स आर मेड इंक्लूडिंग द वायरल प्रोटीन्स एंड द वायरल जीनोम कॉपीज। फिर असेंबली होती है द इनर सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और फिर रिलीज होता है विया एक्सोसाइटोसिस। अब हम कुछ opportunistic diseases को देखेंगे जो HIV की वजह से कॉज होती हैं। Now please note, HIV का जो like purpose है या जो वो उसका mode of action है, it basically reduces your immunity, ठीक है। It itself isn't causing a particular disease. Its infection is basically कि वो immune system को weaken कर रहा है। अब उसके बाद जो actual harmful parts of HIV आते हैं वो इन opportunistic diseases की वजह से आते हैं, ठीक है। इनमें Kaposi sarcoma आ जाता है, which is a skin cancer causing agent, tuberculosis, pneumonia, toxoplasmosis, which is a brain infection, ठीक है। कुछ अदर वायरल डिजीजेस पे भी फिर बंदा ससेप्टेबल हो जाता है, फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी ससेप्टेबल हो जाता है, आई डिजीजेस, GI tract diseases and nervous disorders. So now any of these can affect a person. In fact, like a combination of these can affect a person, जिसकी वजह से फिर इतने वो harmful effects आते हैं HIV की to the point कि death cause हो जाती है, right? The clinical features of AIDS are severe pneumonia, vascular cancer, sudden weight loss, swollen lymph nodes, and general loss of immune function. ठीक है, और ये swollen lymph nodes क्यों आते हैं? It is because repeated infection की वजह से and क्योंकि immune deficiency हो जाती है, ठीक है। अब this is the test for HIV. It is called the ELISA test. It is the enzyme-linked immunosorbent assay. Okay. Now we will study the stages of HIV. There's 3 stages: asymptomatic carrier stage, AIDS-related complex, and full-blown AIDS. ठीक है? And basically ना इसमें the main difference is कि कितनी देर तक वो symptoms रह रहे हैं and how severe those symptoms are. So in the asymptomatic carrier stage,
Fevers, chills, rashes, swollen lymph glands, these are your main symptoms. लेकिन the key point is कि the symptoms come but then they disappear for 9 months or even longer. ठीक है? लेकिन while these symptoms have disappeared, it's not like the person is healthy right now. The person is still infectious. ठीक है? अगर आप उनके ऊपर ELISA test perform करें, the test will be positive. ठीक है? लेकिन उनको बस कोई symptoms नहीं आ रहे, meaning they are asymptomatic. Exactly. ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. इसमें द मेन थिंग इज के ये सिम्टम्स परसिस्टेंट होते हैं, दे परसिस्ट फॉर मंथ्स इन फैक्ट. तो आपके पास इसके अंदर swollen lymph nodes आ जाते हैं in the neck, axilla which is your armpit region, groin, and फिर the person may experience heavy night sweats, cold, flu, diarrhea, memory loss, and even depression. ठीक है? So इसके अंदर the main thing is कि these symptoms are persisting for months at a time. ठीक है? Then the full-blown AIDS is the final stage of AIDS. ठीक है? This is known as actual AIDS basically, जो main आपका infection है. इसके अंदर opportunistic diseases आते हैं, इसके अंदर weakness, weight loss, and persistent diarrhea दिखता है. ठीक है? So these are very important stages of HIV. Then here are some control measures. ठीक है? So these are pretty basic. Avoid direct contact with someone with HIV. Sterile syringes use होनी चाहिए because अगर ना हो तो इट्स पॉसिबल कि जो उसके ऊपर कोई ब्लड हो या उस तरह का हो, that blood is from someone who had HIV, right? So it's important कि surgical instruments, sterile syringes, basically anything जिसके अंदर even जरा सा भी डर हो कि इसके ऊपर blood हो सकता था, right? For example, blades या toothbrushes वगैरह and towels. So it's important that all of these are sterilized, ठीक है? या and don't share them, right? फिर जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए आए उससे स्क्रीन होना चाहिए, उसे प्रॉपर देखना चाहिए अगर इसके अंदर HIV है या नहीं. Islamic teachings should be followed, and then mothers who have HIV shouldn't breastfeed their children. And I think that is all for this section. Next section में हम bacteriophage study करेंगे. So see you in the next lecture.